हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द थर्ड पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों, इससे पहले हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं। इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शेप, साइज एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जितने भी सेल कंपोनेंट्स होते हैं बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर में, एज फॉर एग्जांपल मेसोसोम्स या फिर आपका फ्लैजेला, उनके सेल मेम्ब्रेन, देयर सेल वॉल, इन सबको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। In the second lecture, we have discussed about their nutrition, growth, as well as their reproduction. Today, we are going to discuss about genetic recombination. What do you understand by genetic? Okay, you can question yourself. Genetic means something in their genetic material is recombined or added or exchange take place, that we can say genetic recombination. So, interchange of genetic material, it is called genetic recombination, and here we will see it through three different processes. And today we will discuss about conjugation. Now, conjugation, whenever you mention in your answer or whenever you will explain this word, you need to remember this conjugation tube and you have to mention it. आपको ये mention करना ही पड़ेगा because it is very important factor and through it only exchange of genetic material take place. Now this conjugation was postulated by Joshua Lederberg and Edward Tatum in 1946 in which bacteria? In E. coli. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पूरे नाम याद नहीं हो पाते हैं साइंटिस्ट के, मीन्स इफ यू कांट रिमेंबर जोशुआ लेडरबर्ग, better you can remember only Lederberg and Tatum. Now, two mating type of bacteria are present in conjugation. Which are they? One is donor cell and second is recipient cell. Donor cell means F positive and it is F negative. Now, what is F? This is F factor or fertility factor, sex factor or F plasmid. हमारे पहले लेक्चर में we have discussed about plasmid. Plasmid होता क्या है? Different types of plasmid, and there we have also discussed about F plasmid. Now, if in short I tell you, उनके bacteria, you know very well that there is nucleoid. Their genetic material is called nucleoid. Beside this nucleoid, there is a small double stranded circular DNA which gives advantage traits to the bacteria. What the advantage traits can be? There are different types of plasmid. If it is R plasmid, then let me clear here. We can explain it once more. See, it is a small double stranded circular DNA beside the nucleoid DNA. In which bacteria it will be present, it differs, and you have to also remember that in all bacteria it will be not present. So it gives something advantage traits to the bacteria. It can be R trait or R plasmid. It is resistance plasmid. Now resistance to what? Resistance to antibiotic. It is F plasmid. So if there is F plasmid, so it is fertility factor, means through this you can send the genetic material or send the DNA to the other bacteria. So it helps in transfer of genetic material. As we can see that in conjugation also we are using the F plasmid. So the plasmid which is used in conjugation, you can also call it episome. Now through processes we will see the detailed process or detail step by step how the conjugation take place. Two cells opposite mating type attached temporarily by sex pilus. In first lecture we have also discussed about flagella, pilus and sex pilus. So pilus or sex pilus, that is the surface area structure which helps in matting of two different types of bacteria. Now here you can see one more word you need to mention in your answer, that temporarily. Why it is not permanently, students? Because after genetic material exchange they have to separate out. क्या उनको बहुत लंबे समय तक अटैच रहने की ज़रूरत है? नहीं, जस्ट फॉर जेनेटिक एक्सचेंज दे हैव बीन अटैच्ड, और ये टेम्पररी ही होगा, नॉट परमानेंटली, because after genetic exchange they will be separated out. Now
F factor or F plasmid, you can see this is double stranded circular loop present in cytoplasm. इससे पहले भी मैंने आपको वही बताया कि उनके न्यूक्लियोइड डीएनए में भी, लेट इट बी न्यूक्लियोइड डीएनए के बिसाइड, इनके अलावा देयर इज वन मोर double stranded circular loop present. This we can say plasmid, and if there is F plasmid, so we can say that it is fertility factor. Now conjugation tube formed. अब क्या होगा? Conjugation tube will be formed between two opposite mating type of bacteria. Let it be F positive, and we use different color for F negative. Let it be F negative. So this is what? This is conjugation tube. I am writing CT. Now this conjugation tube will help in the transfer of what? F factor. This is F positive means there is presence of F factor. This is F factor, and there it's nucleoid of bacteria or genetic material of bacteria, and here only genetic material of bacteria is present. क्या यहाँ पे F factor present है students? You will say no, because of which only we are saying it. This is F negative bacteria. So through conjugation tube, there will be transfer or exchange of this F factor. So we'll see now what will happen in our next step. अभी तक क्या हुआ? If we remind that two cells opposite mating type attached by sex pilus, F factor क्या होता है ये हमने देखा, and the next step की conjugation tube formed and F factor replicates. Now let it be the F factor. ये F factor क्या है? ये replicate करेंगे. Okay, it will replicate, and one passes to F negative recipient cell. Two strands of F positive factor is present. ये यहाँ पर two strand देख रहे हैं आप लोग. Now it will separate out. So it will separate out means there will be like this condition. What will happen? One will remain in F positive and the other will get transferred in F negative or recipient cell. Why we are saying it recipient cell? Because there is absence of F factor and donor cell, which cell gives or transfers the F factor, that is called donor cell. Now what will happen in F negative bacteria? If we see here, see F factor is being transferred. Now enzymes will be synthesized. Why? Just to make complementary strand of this F factor to form double helix. Before only we have studied that what is F factor. It is double stranded, remember. But does double stranded get transferred? Confuse नहीं होना है स्टूडेंट्स. आप बहुत आराम से इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या दोनों स्ट्रैंड उनके ट्रांसफर हुए थे. इफ आई आस्क यू, नो, only one passes to the F minus or recipient cell. सिर्फ one strand get passed. अब क्या सेल को F नेगेटिव बैक्टीरिया को एक और स्ट्रैंड बनाना होगा. If total F factor should be present, so one more their complementary strand is being synthesized, और इसके लिए क्या होते हैं? कुछ enzymes आपके synthesis करने पड़ते हैं. Now F minus cell becomes F positive. This is very important. ये आपको हमेशा माइंड में रखना है that after transfer of F factor, F negative becomes F positive. And new strand also forms to complement the left out over strand in F factor. अब मैंने बोला ना कि F factor में भी आपका एक strand रह जाएगा and one strand get passed to the F negative. So here also one more strand, complementary strand will be made through some enzyme synthesis, and the leftover strand also becomes double strand in F positive. Here you can see through diagram. Remember मैं आपको suggestion देती हूँ, and if you can follow बहुत अच्छी बात है. ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं आपके स्टूडेंट्स की थ्योरी इज नेसेसरी, थ्योरी बहुत ज़रूरी है समझना, बट थ्रू दिस डायग्राम्स यू कैन जस्ट क्विक रिवाइज इट. और वेदर इफ यू हैव टू एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड कि मुझे बताओ कंजुगेशन होता क्या है, सी विद इन दिस थ्री डायग्राम्स यू कैन जस्ट मेक इट क्विक रिविजन, और मे यू कैन एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड इन वेरी इजी वे. सो आप डायग्राम बनाइए. अगर आप नोट्स अभी बना रहे हैं मेरे साथ ही साथ, बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ. सो आई विल प्रोवाइड योर नोट्स एंड यू हैव टू मेक दिस डायग्राम,
ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर हो सके. So in this diagram you can see there is F factor, that's why we are calling it F positive. This is F negative. Why there is no F factor? What will happen? The conjugation tube is formed. Now one strand of F factor moves to the our F negative bacteria. In last, what will happen? Its complementary strand forms, and both bacteria have become F positive. Now if I ask you a question कि क्या ये F positive bacteria which was before F negative will act as a donor cell? So if you are not in front of me, okay, आप मेरे सामने नहीं है, but you have to ask to yourself, आपको खुद से पूछना है that this bacteria will become donor cell or not. क्या बनेगा वो? Yes, it will become. Why? Because now it's having F factor. It can also transfer to the recipient cell which is F negative. So the condition or the behavior of this transferred DNA will be shown as a donor cell. Now we can see the second process also. Here you will see something variation. कुछ नए terms आपको सुनने को मिलेंगे and you have to not get confused. Okay, आपको confuse नहीं होना है. There is very simple thing, but if you will make it very complicated by thinking that why this happened, why the question coming in your mind is very nice. बहुत अच्छी बात है अगर आप सोच रहे हैं, but you have to not confuse it too much. आपको ये बिल्कुल confuse नहीं कर देना है that why this one strand takes place or why the double stranded cannot take place. ये दो स्ट्रैंड ही क्यों नहीं चले गए. We will see that in some processes this double strand also get passed, not only single strand will take pass. जितनी चीजों को आप सिंपल रखोगे, ओके स्टूडेंट्स, उतनी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी. आई एम जस्ट सेइंग दैट. नाउ इन द सेकंड प्रोसेस, पैसेज ऑफ न्यूक्लियोइड डीएनए टेक्स प्लेस थ्रू कंजुगेशन ट्यूब. कंजुगेशन है, कंजुगेशन ट्यूब मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Here one more I have said that term will come to you, that is HFR. What is it? High frequency of recombination. बहुत different types of bacteria होते हैं यानी. Okay, आपने सुना भी होगा कि बहुत वेरिएशन है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इन देयर कैटेगरी देयर इज लॉट्स ऑफ वेरिएशन. सो इन दैट ओनली एक स्ट्रेन है बैक्टीरिया का दैट इज कॉल्ड HFR. What stands for HFR? High frequency of recombination. अब इस स्ट्रेन की क्या खासियत है? Something is special about them. वो उनके नाम से ही पता चल रहा है. For example, let me take one more bacteria, which is not S strain. मतलब sorry, not S strain. It is not of HFR. ये HFR है, but this is not HFR strain. अगर आपको कंडीशन दी जाती है that there is a F factor or maybe it is genetic material of another bacteria. And now if I ask you कि बताओ मुझे in which strain it will be very easy to do recombination. So think about it. सोचो खुद में and you can answer in your pen, paper, whatever copy or pen, anything you have in your hands. So you can just make the diagram and you can answer it to yourself कि in which bacteria it will be easy. If I tell you it will be easy in HFR. By its name, you can see that there is a high chance of recombination. Means uptaking of this genetic material of different bacteria, its chances is very high comparison to this bacteria. That's why we are saying that this strain has high frequency or high chances of recombination. Means if I bring, अगर मैं किसी और बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को लाती हूँ for their recombination or exchange of genetic material, so there will be easy for me to do the exchange. समझ में आया? There is no confusion. And if you have any doubt, please mention करिए आप उनको comment section में. If possible, I will see there. अगर possible हो पाया तो मैं वहीं पर आपको reply करके solve करूँगी. Otherwise, in our next class, we will discuss about it. Definitely, I will discuss. So if you have any doubt, please mention it. Now, F factor attached plus nucleoid DNA. Here, one more thing you will see.
that F factor is attached with nucleoid DNA. इससे पहले क्या condition थी students? That there is a nucleoid DNA separated out from F factor. क्या दोनों attached थे? Think about it. क्या दोनों attached थे? In first condition, process 1 में. No, they were not attached with each other. But here F factor attached with nucleoid DNA. This F factor is, sorry, let me explain you here. F factor is attached with nucleoid DNA. Let it be nucleoid DNA, or shall I use different color? Okay, this is nucleoid DNA. Now then the next time what will happen, that HFR and F negative cell attached by sex pilus. This is HFR strain, and using different color, this is F negative cell. This is F negative and this is HFR. Point of attachment of F factor plus bacterial chromosome opens and copy of one strain take place. Now what its meaning, इसका इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका जो F factor था, this is F factor and their nucleoid DNA, let it be this is their nucleoid DNA. At their point of attachment, कहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े हैं? Here and here. यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? दे विल ओपन, कुछ क्रोमोसोम क्या होंगे बैक्टीरियल के, खुल जाएंगे और दे विल मेक अ कॉपी ऑफ वन स्ट्रैंड. सो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है विच ओपन एंड अ कॉपी ऑफ देयर स्ट्रैंड टेक्स प्लेस. उनकी एक कॉपी बन गई. नाउ व्हाट विल हैपन? अ पोर्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पासेस टू द रेसिपिएंट सेल. दिस, ये जो आपका सिंगल स्ट्रैंड जो कॉपी बना है, दिस विल पास टू द एफ नेगेटिव और रेसिपिएंट सेल. कंजुगेशन ट्यूब मे और मे नॉट सर्वाइव. कंजुगेशन ट्यूब हो सकता है आपका पूरा प्रोसेस में वो मेंटेन रहे, बट इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट इट मे नॉट सर्वाइव. वो पहले ही क्या हो जाए, टूट जाए. दिस कंजुगेशन ट्यूब डिजॉल्व, मे बी इट इज ड्यू टू मीडियम, हो सकता है जो उनके लिए फेवरेबल ना हो कि वो बहुत समय तक उस ट्यूब को क्या कर सके, मेंटेन रख सके. सो टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसफर डीएनए मे और मे नॉट टेक एंट्री टू द रेसिपिएंट सेल. व्हाट इज सेइंग अबाउट द डीएनए, क्या कहना चाह रहा है ये? दैट द टोटल, मान लो ये पूरा स्ट्रैंड था and it was taking pass out through or exchange is taking through this conjugation tube. Now what will happen? बहुत clear समझाते हैं because you will get confused. This is conjugation tube and this is your total strand of transferred DNA जिनको कहाँ पर जाना है? F negative पे जाना है. What will happen if I break your conjugation tube? Not I will break. अगर आपका conjugation tube dissolve हो गया due to some circumstances. Okay, now अब क्या कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, क्या पूरा स्ट्रैंड ट्रांसफर हो पाएगा एफ नेगेटिव सेल को? नो. हाउ मच? ओनली दिस मच स्ट्रैंड विल टेक ट्रांसफर टू द नेगेटिव सेल. सो दैट लाइन इज ओनली हियर सेइंग दैट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफर डीएनए, not total length of transfer DNA, may or may not take entry to the recipient cell. हो भी सकता है if there is survive, if conjugation tube will survive. अगर ये पूरा conjugation tube at the time of transfer अगर survive करता है, so whole length of DNA will transferred, but condition can reverse. अगर आपका वो टूट जा रहे, it will break out, क्या तब पूरा length of DNA transfer हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. So you have to understand the condition. But genetic recombination will take place because at least half of the length or maybe third fourth or it may vary, पर कुछ का तो ट्रांसफर हुआ है ना. So genetic recombination is taking place. Now from the diagram you can understand it better. See, this is F factor attached with nucleoid DNA, this is HFR cell, this is F negative cell. ये क्या है? इनका सिर्फ बैक्टीरियल क्रोमोसोम. And what will happen here? Conjugation tube will form and the introduced DNA will take place. ट्रांसफर हुआ है ये यहाँ से. हाँ, इससे पहले क्या हुई थी? एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये पॉइंट ऑफ जो आपका अटैचमेंट था,
वहां पर दे ओपन एंड द कॉपी ऑफ वन स्ट्रैंड टेक्स प्लेस, और ये कॉपी क्या हुई थी, यहाँ पर ट्रांसफर हुई थी। अगेन आई एम सेइंग, थ्योरी के साथ साथ डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू मेक योर नोट्स, आप प्लीज डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फर्दर जस्ट टू टेक योर कॉपी एंड डू द क्विक रिविजन, बिकॉज थ्योरी आप स्टेप टू स्टेप पढ़ रहे हैं, बट डायग्राम्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मच बेटर. Now you can see here that the introduced DNA have replaced their bacterial DNA. So this is displaced DNA and the genetic recombination took place. Now students, there is one more factor important in conjugation, that behavior of transferred DNA. Transferred DNA means that introduced DNA, or it can be F factor जो transfer हुआ है किससे, from donor cell to recipient cell. So इनका behavior कैसा होगा? Behavior means whether they will act as donor cell, whether they can do further genetic recombination to the different bacteria. क्या वो जो donor cell से recipient cell में transfer हुए DNA, क्या वो donor cell की तरह act कर सकते हैं? क्या वो genetic recombination अब कर सकते हैं in other recipient or F negative cell? We will see. So there are three conditions. First है आपका that F factor is transferred डिटैच्ड फ्रॉम क्रोमोसोम। इससे पहले हमने देखा था ना कि एफ फैक्टर यहाँ है और न्यूक्लियोइड यहाँ है, मीन्स क्या इन दोनों में अटैचमेंट हुई है? नो, देयर वाज नो अटैचमेंट। सो रेसिपिएंट सेल बिकम्स डोनर। सबसे पहला वाला प्रोसेस मैंने बताया कि एफ नेगेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एफ पॉजिटिव। एंड आई हैव आस्क्ड यू आल्सो क्वेश्चन, वहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, डज दिस एफ पॉजिटिव विल एक्ट एज अ डोनर सेल? सो इट विल एक्ट एज अ डोनर सेल। Now in second condition, F factor remains at rare end. Pilus broken, F factor not able to enter, but only portion with new genes enter. अब क्या होगा? ये F factor था, अभी हमने पढ़ा पाइलस ब्रोकन या फिर कंजुगेशन ट्यूब अगर डिसॉल्व हो गया, लेट इट बी, थोड़ा और डिफरेंट कलर यूज करते हैं, ये न्यू जीन्स हैं और दिस इज एफ फैक्टर, दिस इज एफ फैक्टर। अब क्या हुआ, ये ट्रांसफर हो रहे थे कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू, बट कंजुगेशन ट्यूब क्या हो गई, बीच से टूट गई। दिस विल लीड टू द ट्रांसफर ऑफ ओनली दिस न्यू जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ इस न्यू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो पाया, ना कि ये पूरे एफ फैक्टर का। एफ फैक्टर कहाँ रह गए, इन द साइड ऑफ डोनर सेल, और ओनली न्यू इंट्रोड्यूस डीएनए का ट्रांसफर हो पाया। अब इस आप कॉन्सेप्ट में क्या समझ सकते हो, दैट रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, रिकॉम्बिनेशन हुआ बिटवीन डोनर फ्रैगमेंट एंड रेसिपिएंट सेल। अब डोनर फ्रैगमेंट किसे कहा जा रहा है, दिस पोर्शन को, बिकॉज दिस वाज ओनली ट्रांसफर्ड। तो क्या एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव बन पाएगा? थिंक अबाउट इट, डज एफ नेगेटिव विल बिकम एफ पॉजिटिव? नो। व्हाई? क्योंकि एफ फैक्टर तो बेटा उधर ही रह गया ना, इसका ट्रांसफर तो हुआ नहीं। ट्रांसफर हुआ किसका, आपका सिर्फ ये स्मॉल पोर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ डोनर सेल, सिर्फ इसका ट्रांसफर हुआ। तो क्या आप एफ नेगेटिव को एफ पॉजिटिव बोलोगे? नहीं बोलोगे। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ऊपर वाला को क्यों बोल दिया है पॉजिटिव, इसको क्यों नहीं बोल रहे? सिंपल है, क्यों? क्योंकि इसमें एफ पॉजिटिव, सॉरी एफ फैक्टर का ट्रांसफर नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो मेरा सेक्स पाइलस और दैट कंजुगेशन ट्यूब, इट ब्रेकन ब्रोकन डाउन बिटवीन देयर ट्रांसफर, उनके ट्रांसफर के ही बीच में वो क्या हो गए, टूट गए, एंड बिकॉज ऑफ विच F factor did not get transferred, only which get transferred, the chromosomal DNA of donor cell. So here you can see that behavior of a DNA which get transferred, it will not behave as a donor or F positive. यही बिहेवियर हम चेक कर रहे हैं ना। इससे पहले वाला जो कंडीशन था उसमें हमने क्या बोला, that it will behave as a donor cell, but here we can see that F negative strain
not becomes F positive. So it will remain as a recipient cell. Now the third condition comes that F factor is free from HFR cell. F factor is free from HFR cell. ये आप क्या कहना चाहते हो कि ये F factor है और ये न्यूक्लियोइड डीएनए है, बट ये स्ट्रेन कौन सा है? दिस इज HFR स्ट्रेन. Now HFR cell, F positive cell. HFR, that's why we are saying an F factor is present. This is F positive. F factor leaves and takes chromosomal DNA segment. So क्या होगा अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की F factor में कुछ segment of chromosomal DNA आ जाएगा, because which we will name it another, that is F dash factor. अब यहाँ पे मान लो कुछ क्रोमोसोमल सेगमेंट आ गया किसका? HFR बैक्टीरियल सेल का. दैट्स वाई हम अब इस एफ फैक्टर को, इन दोनों में क्या डिफरेंस पता चल रहा है? ये भी एफ फैक्टर है, ये भी एफ फैक्टर है, पर इस एफ फैक्टर में क्या है? बैक्टीरियल के कुछ क्रोमोसोमल डीएनए भी ऐड हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ विच वी आर सेइंग इट एफ डैश फैक्टर. नाउ दिस एफ डैश फैक्टर इज ट्रांसफर्ड टू द रेसिपिएंट सेल. अब ये एफ फैक्टर क्या हो चुका है? ट्रांसफर हो रहा है रेसिपिएंट सेल को. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, वन मोर नेम you can remember here, sexduction. Now recipient cell receives chromosomal DNA of donor cell और साथ में क्या? एफ फैक्टर ऑल्सो. सो यू कैन रिलेट इट कि ये प्रीवियस वन से कैसे अलग है. प्रीवियस वन में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? एफ फैक्टर का ट्रांसफर हुआ क्या? नो. वहां पर ट्रांसफर किसका हुआ? ओनली द segment of chromosomal DNA. But here, together with segment, F factor is also transferred, जिसको हमने एक नया नाम दिया F dash factor. इस प्रोसेस को एक नया नाम दिया sexduction. So here you can see that recipient cell not only receives the chromosomal DNA as well as it receives the F factor. So one more time let me टुक द क्विक रिवीजन ताकि आप कंफ्यूज ना हो. पहले प्रोसेस में क्या हुआ है? एफ फैक्टर का ट्रांसफर हुआ, बिकॉज ऑफ विच एफ नेगेटिव से एफ पॉजिटिव बन चुका है. इन सेकेंड प्रोसेस क्या हुआ है आपका? कंडीशन क्या है कि एफ फैक्टर एंड दिस इज द chromosomal DNA of bacteria. So here only chromosomal DNA of bacteria transfer take place. तो यहाँ पे जो आपका F नेगेटिव है, इट विल रिमेन F नेगेटिव, मीन्स रेसिपिएंट सेल ही होंगे. एंड थर्ड कंडीशन इज दैट इन HFR सेल देयर इज F फैक्टर, साथ में इनके क्या अटैच है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम DNA, सम पोर्शन और सम फ्रेगमेंट. नाउ हियर द होल F डैश फैक्टर का ट्रांसफर होता है, F डैश फैक्टर ट्रांसफर्ड to the recipient cell. So this is the major three differences between जो हमने behavior of transferred cell ऊपर discuss किया. So today we have completed conjugation students. आज हमने conjugation complete किया. In next video what we have to see the two remaining processes, which are they? Transformation and transduction. I hope you will not get confused further also. And here also if there is any confusion, please let me know ताकि हम उसको अपने next lecture में solve कर सकें. Okay, and we can discuss it very detail, or I will make you to understand. I will do the revision also. So मिलते हैं next lecture में. Thank you so much for attending this lecture. Till that, bye bye.